की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ योग ही है जो हमें निरोग रखता है और मानसिक शांति पहुंचाता है। यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और योग दिवस पर पीएम मोदी की तरफ से संदेश दिया गया, जो जोड़ता है वो योग है। ये ताकत योग के अंदर है। योग एक वैश्विक आंदोलन बना है और ऐसे में हम सबको इसका हिस्सा होना है। योग से स्वस्थ और बेहतर जीवन जो है वो संभव है। आप अगर दीर्घायु होना चाहते हैं तो योग वो रास्ता है जिसके मार्ग पर चलकर आप खुद भी स्वस्थ हो सकते हैं, समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। I appreciate your cooperation. Thank you for continuing to stay in your spot and be seated. We will start the program very shortly. And again, if you need any assistance whatsoever, we have our volunteers standing by to help. They're wearing their yellow caps so that you may identify them easily. तो दुनिया को योग से जोड़ने वाले भारत की पहचान किस रूप में आज है, उसकी एक झलक आप You can see many sculptures that we have here on the North Lawn. But today the Gandhiji statue is one that is so dear to many of us here. The principles that he holds and the concept of ahimsa is one that many of us are very familiar with, that many world leaders are embodying. And we see this as we look around to many people who aim to be the change that they want to see in the world. तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया मनाती हुई और दुनिया को योग के रास्ते पर ले जाने वाला भारत, जिसने एकता के सूत्र में योग के जरिए देशों को पिरोया है, जिसने बताया कि योग के जरिए आप कैसे वैश्विक महामारी कोरोना जिस तरीके से दुनिया को प्रभावित करती नजर आई, उस पर भी अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको निरोग रहना होगा, आपको योग करना होगा। और यही वो रास्ता है, यही वो मार्ग है जो आपको मजबूत बनाता है, दीर्घायु बनाता है। योग से निरोग बनने की तरफ बढ़ता ये कदम आज दुनिया का, और दुनिया भी इस बात को मानती है कि भारत की जो भूमिका योग के जरिए देश और दुनिया में नजर आ रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सिर्फ एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का जुड़ाव नहीं होना है, मनुष्यता से मनुष्यता का जुड़ाव होना है। योग से वो मनुष्यता कैसे प्रबल हो, वो मनुष्यता कैसे दृढ़ हो, वो कैसे स्वस्थ और दीर्घायु हो, ये कोशिश योग करता है। और यही योग की ताकत आज एक बार फिर से संदेश के जरिए, योग मंत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना, जाना कि कैसे भारत ने देश और दुनिया को एक साथ योग के रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित किया। और अब ये योग जो है एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। तो न्यूयॉर्क से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर यूएन में पीएम मोदी योग के जरिए सिर्फ स्वस्थ नहीं रहे, स्वस्थ समाज का निर्माण करें, कैसे बेहतर सोचें, बेहतर करें और बेहतर की तरफ बढ़ें, ये प्रयास हम सबको करना है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो, बेहतर हो,
तभी सब कुछ अच्छा होता है। और इसीलिए सूर्योदय से पहले उठकर नृत्य, जो आपकी नित्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें करने के बाद आप जब योग करते हैं तभी आपका जीवन जो है वो निरोग हो पाता है। आप उस जीवन को जी पाते हैं जो आपको अनमोल तोहफे के तौर पर इस सृष्टि में आकर प्राप्त हुई है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास So, है। every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. And it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly,
it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide, which includes the principle of भारतीयों को होना चाहिए और प्रधानमंत्री को not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga. लोगों का भाषण तो चल रहा है, लेकिन असली काम अब कार्यक्रम अब शुरू होगा थोड़ी देर में, जब प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद, जब सारी यहाँ पर मौजूद जनता योग करेगी और दुनिया को ये संदेश जाएगा कि यहाँ यूनाइटेड नेशन जो दुनिया भर के देशों का एक समूह है, जो जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इस हेडक्वार्टर में तमाम देशों के लोगों का जुड़ना, सेलिब्रिटीज़ का जुड़ना, ये दर्शाएगा, ये दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस मुकाम तक इसको लेकर आ गए हैं। तो इस योग की बहुत बड़ी भूमिका होगी दुनिया भर के स्वास्थ्य। न्यूयॉर्क सिटी is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं मंच पर और इंतजार इस बात का हो रहा है कि वो क्या संदेश देते हैं, और साथ ही साथ इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि वो इस योग के कार्यक्रम में कितनी देर तक हिस्सा लेते हैं। हालांकि 9:15 साढ़े 9 बजे तक यहाँ अमेरिकी समय अनुसार प्रधानमंत्री को इस मैदान में, इस परिसर में रहना है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी जिस परिधान में नजर आ रहे हैं उससे तो प्रतीत यही हो रहा है, जो संकेत हम लोगों को मिले हैं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ बैठकर योगा भी करेंगे। तो ये दुनिया के सामने food insecurity to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind. तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सबसे खास मौके पर पहली बार नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री, इस वक्त विदेशी जमीन से बहुत बड़ा संदेश देते नजर आएंगे। साल 2015 से लेकर 2022 तक की ये तस्वीरें, जब
that भारतीय we जमीन will be से a leader उन्होंने here योग को in अपनी New York जीवन शैली City, में शामिल as करने you के are a कई leader महत्वपूर्ण खास in यहाँ पर your मायने बताए। own अब यही मायने environments. वैश्विक Thank पटल you से for रखते हुए allowing me to प्रधानमंत्री नरेंद्र rejoice मोदी with you कुछ देर में today. नजर आएंगे। हालांकि पूरी तरह से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती है कि जिस मकसद को लेकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी एक मुहिम के तौर पर, वो मकसद यहाँ पर आखिरकार कामयाब हुआ। तो ये साल दर साल की तस्वीरें और तस्वीरों के साथ एक संदेश यही कि ये हमारी विरासत का हिस्सा रहा है, हर घर में योग रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पहचान नहीं थी। ये पहचान दिलाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये 9 साल का सफर कहां तक हमें लेके आया? ये 9 साल का सफर हमें यूएन हेडक्वार्टर तक लेकर आया है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी ये सिर्फ योग नहीं है, हम भारतीयों के लिए गौरव का विषय है, हमारी ये बड़ी पहचान है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर से। It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. ये योग के फायदे गिनाते हुए कि योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति के लिए भी बेहद जरूरी है। विदेशी जमीन पर भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पीएम मोदी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। ये तस्वीरें यूएन हेडक्वार्टर से भले ही है, लेकिन फर्क करना मुश्किल है क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यूएन हेडक्वार्टर तक ही पहुंचा है, जिसमें 175 देशों के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं। और भारत को जो पहले सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाता था, अब सुपर पावर में तब्दील हो चुका है। That he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember
About 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher, or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event.
success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. इस वक्त पीएम की बड़ी बातें आप सुन रहे थे और जो हम पहले भी आपके सामने इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि ये साल 2023 है, यानी 9 दफे हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लिया और ये हमारी बड़ी पहचान है। इन्हीं बातों का पीएम मोदी भी जिक्र कर रहे थे कि ये हमारी प्राचीन परंपरा का अहम हिस्सा है योग। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने